period. So then Government of India started National Leprosy Control Program in 1955 based on Dapstone domiciliary treatment through vertical units implementing survey. तो गवर्नमेंट कौन कला ना गोटे कमिटी कला फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द दिस टाइप ऑफ लेप्रोसी पेशेंट्स एजुकेशन देला ट्रीटमेंट एक्टिविटीज मध्य कला फास्ट ऑफ ऑल माने हमर एरा सब जो पढुचु जो डिजीज कंट्रोल पई first of all is health awareness program is very much important, then after that medicine treatment. Then since the early 1980 MDT has revoluntated the treatment of leprosy. 1980 ରୁ start helani for taking of MDT medicine to control leprosy bacilli. It is the combination of the drugs rifamycin, clofazimine and dapsone is a virtually guaranteed cure for leprosy, as even a single dose of MDT kill 99% leprosy germs. The patient cases of infectious within a few months of starting the course of treatment. Then MDT is now available in every government hospitals in free of cost. Free of cost रे government medical रे दिया जाउची ताकि we should control the leprosy disease. आमे कंट्रोल करिया पे ई सब जिंस दिया जाउची. Then the patient cases the infection within a few months of starting the course of treatment. MDT is now available free of cost in all working days of all sub-centers, primary healthcare center, government dispensaries and hospitals in the country. Sabu government area re primary jemti PSC achi, CSC re meluchi, district mane district hospitals re meluchi, all kinds of government hospitals the MDT medicines was available. Through the diseases found throughout the country, it is not equally distributed. There are wide variation in the prevalence. Even in low endemic area, there are pockets of high prevalences. The area of high prevalence are now found mainly in south eastern part of country. Amo India ro south eastern part re besi endemic ba besi seiti hi dekha jaye, which includes the state of Tamil Nadu, Odisha, Bihar, Pondicherry, Andaman and Nicobar Islands. तो सही जगह रे बेसी देखा जाए. The area of moderate prevalences are found mostly in central and southern and western part, eastern part of the Himalayan foothill in the country. The area of low prevalences are found mainly in the northwestern part of the northwest ଆମ part रे ଟିକେ बहुत कम देखा जाए, किंतु एई सब जगह मानकरे ଟିକେ अधिका देखा जाए. Activities कौन रहुचे प्रोग्राम रो ना मेन activities on the NLEP हैला National Leprosy Eradication Program को कहती NLEP include early detection of causes by house to house survey. The first of jette class and previous classes we had already discussed about. First we should need home to home survey. Who are doing this kind of work? The health workers are there. Male female health workers will visit every community house to house, and they will in questionnaire method or in any kind of method they will ask about, and also ask about the sign and symptoms of leprosy, tuberculosis, measles, etc. Then they will register their name in primary healthcare center. माने आमर जो हेल्थ वर्कर्स माने अछंती से माने सब घर घर विजिट कला परे दे जदि तांको भितरु किए भी एई सब कम्युनिकेबल डिजीजेस रे अफेक्टेड थांती, देन दे विल रजिस्टर देयर नेम इनटू मान तांको एरिया रे जो पीएससी थिबो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, तो सेठी से माने सेटा करबा द्वारा तो सेठू तांको फ्री मेडिकेशंस, फ्री चेकअप्स माने डोर टू डोर पुनी विजिट ए सब चले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमे एठी भी शेयर करिबा सबु कम्युनिकेबल डिजीजेस रे वी शुड सर्वे इज मस्ट. Then possible emphasis is given on the education of the patient. तापरे कौन करिबा डोर टू डोर सर्विस परे we should aware the people, we should aware the community people about the leprosy diseases. Then their families and the community in fact to leprosy and its curability. तो leprosy रो हमें तांको aware करिबा how to prevent, how to control leprosy in your community and with your family also.
फैमिली और कम्युनिटी रे केमती ताको प्रिवेंट करिबा वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अवेयर देम तापरे रहिला इंफ्रास्ट्रक्चर कौन दरकार ना से सब एरिया रे लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट कवर्स 4 to 5 लाख तबे डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑफिसर्स रहिबे हेल्थ वर्कर्स रहिबे तापरे तांकर मास मेंबर्स रहिबे आ गोटे जेमती कहितली गोटे माने हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहिबो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रहिबो इंफ्रास्ट्रक्चर रे कोन लिखिबे ना हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम इज नंबर 1 for community and for family and maintenance of record re rahibo whether the patient is suffering from any whether the patient is suffering from leprosy or any signs and symptoms is there or not माने गोटे patient रे leprosy रो sign symptoms देखा जाले we should record it their signs and symptoms in a book आमे से गोटे record maintain करिबा then training then we will give training to the community how will you prevent the leprosy when you are suffering from leprosy how will you control in your family as well as in your community तांको आमे करिबा माने आमे जदि एमडीटी नियो हैला आइसोलेटेड रूम रे रुह तो इस भले आमे तांको दबा then monitoring after giving them to mdt doses mdt medicines to the patients then we should after some after 6 to 4 weeks after 1 week after 1 month then we will again monitoring the patients then rehabilitations rehabilitations are also there we should isolate the patients in a separate room then administrating multi drug treatment ता माने आमे isolated room रे तांको रखिबा को चेष्टा करिबा हैला then we will give medicines to them then we will record their signs and symptoms and also aware the community how to control the leprosy ता माने आमे एई जिंस को infrastructure रे आपण माने लिखिबे activities रे लिखिबे early detections of the disease to home survey school survey slum survey हैला ए सब जिंस activities रे रहिबो infrastructure रे रहिबो कि लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट रहिबो ता धरे हमरो लेप्रोसी ऑफिसर्स रहिबे ता धरे हेल्थ वर्कर्स रहिबे हैला तापरे हमरो सब इन केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट हेल्थ एजुकेशन दिया हबो ए सब गोडा इंफ्रास्ट्रक्चर रे लिखिबे तापरे न्यू करेंट स्ट्रेटजी एंड न्यू पैराडिग्म्स अंडर द प्रोग्राम तापरे कोन करिबा ना मोर फोकस ऑन न्यू केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट completions improvement of quality of leprosy services हमें कौन करिबा न्यू माने हमर जो न्यू सब स्टेप्स ओडा रहुची तो सेतरे हमें इंप्रूवमेंट जेमती हमर 80 रु जेमती एमडीटी मेडिसिन स्टार्ट हेतला एबे आसी के 2025 हेलानी तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जिंस ओडा चेंजेस हेची न्यू इंप्रूवमेंट जोटा इंप्रूव करिबा द्वारा पेशेंट माने मध्ये अर्ली रिकवरी करंती तो सेति पई इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लेप्रोसी सर्विसेज आमे आउटिके क्वालिटी बढ़ेबा स्ट्रेनिंग रेफरल सर्विसेज विथ मोर फोकस ऑन द लॉन्ग ऑफ द लेप्रोसी अफेक्टेड जो माने लेप्रोसी अफेक्टेड पर्सन होउचंती तांको आमे विजिट करी तांकर सर्वेस करिकी तांकर तापरे आमे तांको मॉनिटरिंग करिकी तांकर केमती कोन कंट्रोल होउची सेटा को आमे देखिबा then support of NRHM for improving delivery of leprosy services by improvement of ASA health village sanitation community रोगी कल्याण समिति गोटे रोगी कल्याण समिति अछि गोटे आशा कर्मीज अछंती विलेज हेल्थ गाइड सब अछंती बा मास मेंबर्स अछंती तो सेमानको सपोर्ट नेबा हैना सपोर्ट सेमाने कोन करिवे सेमानकोठु सर्वे सेमाने तांको घरे घरे डोर टू डोर सेमाने सर्वे करि परिबे देन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशंस ऑफ लेप्रोसी अफेक्टेड पर्सन तो गोटे गोटे कम्युनिटी रे गोटे गोटे रिहैबिलिटेशन सेंटर करिबा जोथरे कि सेही भले जदी गोटे गोटे फैमिली रो हमें सस्पेक्टेड पेशेंट्स को हमें रिहैबिलिटेशन सेंटर रे रही कि सेही ट्रीटमेंट स्टार्ट करिबा अदरवाइज इट विल स्प्रेड in your house by in your family then to the community then renewed focus on reduction of stigma and discrimination against leprosy affected persons and their family members तो सेमानकु मध्ये अवेयर करिबा देयर फैमिलीज माने तांको भी कहबा माने तमको भी केमती माने जेन स्प्रेड न होबा पई एटा हेल्थ अवेयरनेस दाओ ए सब लिखिबे जति भी लेप्रोसी पड़ला यू हैव टू राइट अबाउट द एक्टिविटीज केमती एक्टिविटीज चलीची डोर टू डोर सब
सर्वे चली स्लम सर्वे रे हबो स्कूल सर्वेस करा जिवो हाउस सर्वे करा जिवो एडा सब एक्टिविटीज चली अर्ली डिटेक्शन सब तापरे हमरो तांकर ट्रीटमेंट चलिबो इंफ्रास्ट्रक्चर रे जंती हमरो लेप्रोसी ऑफिसर्स रहिबे हेल्थ वर्कर्स रहिबे विलेज गाइड्स रहिबे है तो आशा कर्मीज रहिबे इमाने सब रहिबे आ कोन कोन हेल्थ एजुकेशन दिया हबो पार्टिसिपेशन मेंटेनेंस ऑफ तांको रिकॉर्ड्स मेंटेन हबो तांको ट्रेनिंग दिया जिवो देन तांको मॉनिटरिंग करा जिवो वेदर दे आर रिकवरिंग और नॉट रिहैबिलिटेशन सेंटर सब तांको दिया जिवो माने जेंते आइसोलेटेड आइसोलेशन करके तांको रखा जिवो तापरे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग तापरे मेडिसिन दिया जाय कि सेति पय कि हमर ए प्रोग्राम रो मेन एम आसिले ओन लैंग्वेज रे ओन वर्ड रे यू हैव टू राइट अबाउट एक्टिविटीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ न्यू जदि किछि हमर न्यू प्लानिंग्स अछि अंडर द प्रोग्राम्स तेबे लिखिबे न्यू प्लानिंग्स रे लॉट्स ऑफ सपोर्ट ऑफ एनआरएचएम रहिला हला इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ द सर्विस क्वालिटी आउरी आउरी बढ़ेले मध्ये भलो हबो मोर फोकसेस ऑन न्यू केस डिटेक्शन आमे प्रथमे अर्ली डिटेक्शन बा बहुत जंत एक्यूट स्टेज बा प्रथम स्टेज रे आमे ताकू डिटेक्शंस करिवाटा ही हमको प्रिवेंशन रो मेन पाथ हला एडा लिखिबे तापर सेकंड को जिबा नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस आमे जो ब्लाइंडनेस होची बा छुआ मनकर बेसी विटामिन ए डेफिशिएंसी रो देखा जाए देन सेहित पय कि हमर एम अछि नेशनल प्रोग्राम फ्रॉम कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशल प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री हमर एटा मेजर प्रॉब्लम हमर कंट्री रे हला ब्लाइंडनेस it is estimated that there are 30 million people completely blind in the world india alone accounts for 12 million 30 million to 12 millions हमरो इंडिया रे ब्लाइंडनेस देखा जाए तो सेति पय कि कोन कला गवर्नमेंट ना गोटे नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करिया पे गोटे नेशनल प्रोग्राम कला तो the latest studies have revealed about 80% of blindness is due to cataract तो कैटरेक्ट जोटा हमर होची मोतियाबिंद होची तो सेति पय कि बहुत लोक ब्लाइंड हे जानती तो सेटा बेसी हमर ओल्ड एज रे देखा जाए आ विटामिन ए डेफिशिएंसी रो छुआ माने चिल्ड्रन माने ब्लाइंड हे जानती तो एमिति मिसिला परे हमर इंडिया रे सबुटो अधिका प्रॉब्लम्स अछि ब्लाइंडनेस रो देन resulting in blurred vision which is curable by surgical interventions तो कैटरेक्ट हला परे सर्जिकल प्रोसेस रे we should remove the cataract from the eyes आमे आखिरु सर्जिकल जो माने न करूचंती तो they will going for blindness then today there is a backlog of 22 million cataract cases and adding 2 million every year तो सेटा कोन करबा ना ट्रेनिंग ऑफ पैरामेडिकल ऑप्थोमेलिक असिस्टेंस तो हमर सब हेल्थ केयर सेंटर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर रे गोटे गोटे असिस्टेंट ट्रेनिंग पैरामेडिकल ऑप्थोमेलिक असिस्टेंस को रखा जाउची फॉर अर्ली डिटेक्शंस ऑफ ब्लाइंडनेस बाय कैटरेक्ट रो डिटेक्शंस पाई कि जेरियाटिक पर्सन्स मानन को पाई कि तो तांकर गोटे स्पेसिफिक एज हला परे आफ्टर 50 तो से माने से ऑप्थोमेलिक असिस्टेंस विल चेक देयर वेदर द persons with cataract or not cataract अच्छे कि नहीं सेटा देखंती then also they advised for surgery also नहले जदि surgery by any treatments under न रहिबे they will in future they will reach to the blindness तो blindness को पहुंची जानती समाने तो सेति पय कि हमरो ट्रेनिंग ऑफ पैरामेडिकल ऑप्थोमेलिक असिस्टेंट्स वेयर इन गवर्नमेंट मेडिकल्स training of medical graduates and ophthalmologists or originate to the needs of NPCB तो एटा कंट्रोल करिया पय कि बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे आई स्पेशलिस्ट ऑप्थल्मोलॉजिस्ट वाज अपॉइंटेड तापरे कोन ओरिएंटेशन रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स तो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन एमओ बा मेडिकल ऑफिसर्स मानकर हुए in the primary health care center in also district medical in hospitals etc continuing medical education for eye specialist तो आई स्पेशलिस्ट को कंटिन्यूएशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन आई स्पेशलिस्ट मानन को दिया जाए प्लस सेमानकर ट्रेनिंग दिया जाए तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैटरेक्ट्स पाई कि ब्लाइंडनेस ता बेसी होची देन पैरामेडिकल ऑप्थोमेलिक असिस्टेंस
are trained in 37 training units attached to medical colleges, regional institutes, national institutes, training of primary healthcare center, medical officers, conducted medical college, district hospital, selected eye hospitals to prepare the eye health care for comprehension. माने एटा हैला हमरो जो प्रोग्राम टा गवर्नमेंट रखिला तो से कोन कला ना ट्रेनिंग इज मोस्ट important. They will train up the medical officers of PSC. They will appointed some ophthalmologist or assistant ophthalmologist into the hospitals, government hospitals, so that the early detections of cataract is early detection of cataract is completed. माने जेमती कि early detection cataract रो हमरो जल्दी हे परिबो. तो एटा हला नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस. आमे एमती early detection टा हला तारो कंट्रोलिंग पॉइंट. आमे कंट्रोल करि परिबा जदि early detection हला कि तारो ट्रीटमेंट चलिला. Surgery is there one of the treatment to remove cataract from the eyes, so etc. तापरे पढ़िबा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम. What is National AIDS Control Program? AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, is a disease characterized by loss of the cell medial immune response due to decreased number of T cells, T lymphatic cells. The causative agents has not been identified, but the disease of the virus origin. So AIDS got a virus, viral disease. It is the main cause of the AIDS is the virus. The National AIDS Control Program was initiated in the year of 1986. रे आमर National AIDS Control Program first start hella was initiated in India. The three major components of the program includes कौन hella ना surveillance, screening of blood and blood products to ensure blood safety, and information, education and communication. First of all is health awareness, health education and communication is important in case of control AIDS in our country. Screening, then after that screening of blood serum test, and ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଦଉଛେ କି ନଉଛେ କି ଯାହା ବି କରୁଛେ we should maintain the safety. We should follow the safety measures. ଆମେ safety measures को follow करिबा ହେଲା. देन तापरे कौन लिखिबे ना ऑब्जेक्टिव कौन तो काहे कि नेशनल एड्स प्रोग्राम विल इनिशिएटेड इन आवर कंट्री ना मेन ऑब्जेक्ट्स हला कौन ना इन्फेक्शन बाय स्टेपिंग अप एक्टिविटीज अमंग द प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन थ्रू हेल्थ एजुकेशन. तो मेन ऑब्जेक्टिव्स हला प्रिवेंशन हला हमर हेल्थ एई सब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हो जत्ते भी कंट्रोल प्रोग्राम्स हमर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट हमर इनिशिएट करूची only to prevent सेटा स्प्रेड न हो जाओ सेटा एंडिपिंग न हो जाओ सेथिपाई कि they will initiated national AIDS control program. Preventions of new infections in high risk groups and general population through preventions of new infection high risk माने to prevent the infection or spread of infections in our community, so that this program's main aims of this program is to prevent the diseases. Then तापरे कौन हबो ना providing greater care, support and treatment to a larger number of people living with HIV and AIDS. जो माने HIV AIDS लोकों को संगेरे रहउचंती कि फैमिली रो के जणे अछि, then तांकर awareness, educational awareness we will give them, their family and to the community also, to prevent the spreading of the disease. Then strengthening the infrastructure system and human resources in prevention, care, supports and treatment programs to district, state and national level. तो infrastructure मैं already कही सारी infrastructure माने we should prepare one team. Infrastructure हमारे team गढ़िबा जो थरे कि hospitals are there, government medicals are there, primary, then community health center, then district centers, etc. are there, and also one of the AIDS medical officers are there, AIDS control medical officer is there, health workers are there for their survey, then village guides were there. These are the teams of the
infrastructure. Teams to control its program. Seita infrastructure ଆସିବ and human resource is prevention, care, support and treatment programs at the district, state and national level. First of all is health awareness, education, and we will educate the people of the community, and then we will give the medicine to the patients, and also give good quality of nutrition and program management and strengthening of clinical management capabilities. So এই ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲେ you have to write about the objectives of all the national control programs. ଆମେ ତାକୁ କେମିତି control କରିବା? The health awareness is important, and also one team infrastructure, one team is very necessary to detect the early detection. माने जल्दी early detection ପାଇଁ कि we have to prepare one team. ଆମେ ସବୁ ଗଢୁ ଗୋଟେ team. ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ NMHP ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1982 ରେ. The objective ହେଲା availability and accessibility of minimum mental health care for all of the foreseeable future, and particularly to the most vulnerable and underprivileged section of population, to encourage application of mental health knowledge in general health care and social development. तो এটা भी ठीक से या medical officer colleges are providing training in the knowledge in the skill of mental health in the primary healthcare physician and paramedical. तो এটা कौन होची ना तार मेन हला primary health care through the program, provision of tertiary care institution in the mental disorder. We should माने कौन आमर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो जिते भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट हॉस्पिटल्स अच्छी से गोटे गोटे मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स रहिबा दरकार, एंड आल्सो ट्रेंड डॉक्टर्स वर देयर. तापरे वी शुड अवेयर, वी शुड train to the mental ill patients, माने mental ill patients असला परे we should aware them, we should counsel them, counseling करिबा ये करिबा एटा सब हमरो ट्रेंड अप करा जाय तांकर जो मेडिकल ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड फॉर इन मेंटल हेल्थ रे जो माने अपॉइंट हेतिबे. से भलिया नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम केबे स्टार्ट हैला ना सेटा आसिला. नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम वाज इंक्लूडेड इन द 7th 5-year plans. One of the central health sector was allotted, माने हमरो एठी अछंती ₹25 lakhs to initiate district diabetes control program. इतने patients are affected with diabetes. तार ऑब्जेक्टिव कौन ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क ऑफ सब्जेक्ट्स at early stage and imparting appropriate health education, focus of primary prevention of diabetes. First of all is early detections. हमें प्रथमे ताको identify the their symptoms है. तापरे early diagnosis of the disease and institution of appropriate management so as to reduce morbidity and mortality. माने morbidity और mortality को माने we have to reduce the morbidity और जो mortality, then early diagnosis with the early treatment. early diagnosis है कि early treatment करिए और early awareness करिबा तेबे we have to control national diabetes को हमें control करि परिबा. Then prevention, arrest of salong of acute metabolic as well as chronic cardiovascular renal complications of the disease. जदि आमे ताको प्रिवेंशन बा प्रिवेंट न करिबा, then it will damage our other organs such as cardiac and renal as well as our eyes, neuro, nephro, etc. And these all are affected when we will when we will not prevent the disease, then it will affected all those organs. Then provision of equal opportunity to ensure socialistic activity, physical attainment as well improves quality of life. Then we should aware them to improve the quality of life. Then do some physical exercises with your diet controls, etc.
एटा तार मेन ऑब्जेक्टिव। तापर ट्यूबरकुलोसिस रा मेन ऑब्जेक्टिव कोन ना ट्यूबरकुलोसिस इज अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस सैंपल सर्वे conducted by the ICMR in 1955 to 58. Then 1.5% of the total population is estimated by the suffering from active tuberculosis of lung, of which 1/4 are infectious. And prevalence is same in urban as well as rural areas. Urban re jetiki, rural re setiki infection हुए. It already we are already discussed in last classes. In previous classes we had already discussed about the tuberculosis. Seta kon हुए ना it is due to the low socio-economic groups and due to the lack of knowledge, due to the lack of awareness, ignorance, poverty. These all are the cause of tuberculosis. They were lived in ill ventilated rooms, माने ventilations न थाए, and and house are in small size. गोटे छोट घर रे समस्ते रहिबा द्वारा तो it will spread in the whole family. तो सेटा हला lack of awareness, knowledge ए सब जिंस और lack of poverty also, माने गरीब जो माने lack of money, माने जो मानकर बहुत गरीब श्रेणी जाउछंती आ तापरे due to the environment unclean environment, माने सफा नथिबो, cleanliness नथिबो, तो सेति पई कि tuberculosis was spread. आर कौन पाई कि आमे रिवाइज कलु नेशनल न्यूट्रिशनल कंट्रोल प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल ट्यूबरकुलोसिस सॉरी रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को काहे के रिवाइज रहला ना कौन पाई ना सेतरे ट्यूबरकुलोसिस रे हमर एते लोक अफेक्टेड होंदी, सेतरे हमर मोर्टालिटी रेट वाज इंक्रीज्ड, तो मृत्यु हार एते बढ़िला, सेति पई सेटा रिवाइज रहला, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम. तार मेन गोल कोन, मेन गोल है आमे ताकू रिड्यूस करिबा मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस. आउ वी शुड प्रिवेंट द ट्रांसमिशंस ऑफ द डिजीज, माने डिजीज टा स्प्रेड हेले ही हमर कोन हुए ना हमर मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी रेट विल हाई बढ़ी जाए. सेति पई फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कंट्रोल द डिजीज, वी शुड स्टॉप स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज इन कम्युनिटी एक्सेट्रा. तापर ऑब्जेक्टिव कोन टू क्योर at least 85% of all newly detected infectious cause of pulmonary tuberculosis, to detect at least 70% estimated new smear positive pulmonary tuberculosis cases. तो ऑब्जेक्टिव है we should माने तांको न्यूली डायग्नोसिस जोटा अर्ली डिटेक्शन मु जोटा कहूची, तो सेमानकर कोन होची ना अर्ली डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस तांकर टेस्ट इज देयर, सम स्पुटम टेस्ट इज देयर, sputum test positive asile we have to start our treatment immediately. Okay, seithre amaro we should prevent the disease from spreading in the community. Tapre at least 70% estimated new smear positive pulmonary tuberculosis cases. तो आमे तांको early detection, objective है early detection and early treatment will started. When early detection is in, then when we will start our treatment earlier, and then the we should reduce the mortality rate of tuberculosis. Tuberculosis जते लोक मरुथिले we should control them. सेते पय रिवाइज हला tuberculosis रे एते लोक माने हाई हला मरिवार, तो से माने रिवाइज program of tuberculosis will initiated by the government initiate सेते पय कला. तापर हमें देखिबा व्हाट इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बा NRHM. এটা क्वेश्चन पड़िबो एग्जाम रे आसीबो. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कमिटेड itself provision of improved public health services under the common minimum program. गोटे common minimum program भितरे how to improve the health problems को केमिति improve करि परिबो minimum infrastructure ये रे, तो सेटा हला NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. कारण रूरल रे ई सब कम्युनिकेबल डिजीजेस आर मोर इन रूरल एरियाज, सेति पे से रूरल रे गोटे मिशंस कला बा गोटे जेमती हमर टीम कहउतले छोट टीम नै, एटा गोटे बहुत बड़ नेशनलाइज टीम से कला. कारण ए सब कम्युनिकेबल डिजीज जे हमर मोर्टालिटी रेट वाज डे टू डे इट विल गोज ऑन हाई एंड हाई, बहुत दिन को दिन हाई हला परे से गोटे मिशंस करला, ता कहते नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. तो रूरल रे बेसी कम्युनिकेबल डिजीजेस हुए, सेति पे से गोटे प्लान कला
Drawbacks of the current health system included centralized planning instead of decentralized planning, using locally relevant strategies, institution based on population norms rather than sanitation, fragmented diseases, special approach rather than comprehensive healthcare, inability of the systems in mobilize actions in the area of safe water, sanitation, and hygiene and nutrition. The key determinants of health is context of our country. तो कौन है ना ये सब जिनस को इम्प्लीमेंट करने जमती गोटे एटा गोटे टीम वर्क एंड से कौन हम ना आम सैनिटाइजेशन हाउ टू मेंटेन द सैनिटाइजेशन हाउ टू यूज द सेफ ड्रिंकिंग वाटर से माने सफा पानी नले बहुत ये हम माने बहुत इन्फेक्शंस स्प्रेड बाय ड्रिंकिंग अनसेफ वाटर तो से कि सैनिटेशन को ये इम्पोर्टेंस देला हेल्थ केयर एंड इनेबिलिटी सिस्टम टू मोबिलाइज एक्शंस इन एरियाज ऑफ सेफ वाटर सैनिटेशन हाइजीन न्यूट्रिशन सबू को से मिशन रो अंडर रे रखिला तो तार मेन काम है गुड न्यूट्रिशन देखिबा हाइजीन देखिबा सैनिटेशन देखिबा सेफ ड्रिंकिंग वाटर आ ता छड़ा हेल्थ केयर सप्लाईज तो एतिकी काम होला नेशनल रूरल हेल्थ मिशन रो तो एटा श्योर क्वेश्चन you have to write in this form. Then national rural health mission is proposed to cover the entire country with special focus on 18 state including empowered action group ये सब जिनस हमर NRHM is a national rural health mission तो एटा all over the countries रे सब गोटे गोटे जगह रे एटा सब अच्छी गोल्स है तार कौन तार गोल्स ना तार टार्गेटेड पर्सन किए ना चाइल्ड वुमेन्स हेल्थ वाटर सैनिटेशन हाइजीन इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन तार मेन गोल है यू हैव टू राइट जदि एनआरएचएम पढ़ला तो यू हैव टू राइट द गोल्स इज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज टू असेस पब्लिक हेल्थ सर्विसेज टू द वुमेन्स access to public health services to the women's health, child health, water, sanitations and hygiene, immunization and nutrition. तारा goal है या then preventions and control of communicable and non-communicable diseases. Then their main second goal is to prevent and or control of communicable and non-communicable diseases including locally endemic diseases जोटा spread हो जाए गोटे जन कलेरा जन डायरिया डिसेंट्री सेटा गोटे कम्युनिटी रे होल स्प्रेड हो जाए तो तार काम है टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल केमती ना हेल्थ अवेयरनेस दब हेल्थ अवेयरनेस रे केमती सेफ ड्रिंकिंग वाटर केमती भलो एनवायरनमेंट वी शुड हाउ टू क्लीन द एनवायरनमेंट वेल हाउ टू मेंटेन द हैंड सैनिटाइजेशन ये सब जिनस कहबो ता छड़ा मेडिकेशंस भी से कहबो access to integrated comprehensive primary health care reduction in infant mortality rate IMR ଆଉ maternal mortality MMR माने हमरो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट हो कि मदर्स मोर्टालिटी रेट हो ताकू केमती रिडक्शन करिबा तार मेन गोल देन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन है तो जेंडर्स एंड डेमोग्राफिक बैलेंस सेटा भी से देखे रिवाइटलाइज लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस एंड मेन स्ट्रीम आयुष प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल ता माने तार गोल सब आपण मानकु सब गोल्स लिखिया को पड़िबो से को मानकु कोन कोन सुविधा दउची कहा को केमती कंट्रोल आईएमआर एमएमआर ए सब को रिडक्शन पाए कि तार गोटे मेन गोल अछि पॉपुलेशन कंट्रोल रखिया पाए गोटे मेन गोल देन हेल्थ ट्रेडिशंस एंड मेनस्ट्रीम्स आयुष तो से ताकू इंक्लूड करंती आयुष को करिकी सब जगह ट्रीटमेंट गुड़ा चलाती एंड प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करती हाउ टू मेंटेन ए हेल्दी लाइफस्टाइल द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ एनआरएचएम है कौन ना आईएमआर रिड्यूस टू 30/1000 लाइफ बर्थ maternal mortality reduced to
100 रे 1 लाख रे 100 लाइफ बर्थ केमती हबो TFR रिड्यूस टू 2.1 तो रेजिंग द सेक्स रेशियो 0 to 6 इयर्स जोटा तो मलेरिया मोर्टालिटी रिडक्शन मलेरिया जो मलेरिया रे जो लोक माने मरछन तार रिड्यूस करिबा ब्लैक फीवर काला आजार मोर्टालिटी रिडक्शन फाइलेरिया रिडक्शन डेंगू मोर्टालिटी रिडक्शन कैटरेक्ट ऑपरेशंस लेप्रोसी प्रिवालेंसेस रेट रिडक्शन तो यही सब जिनस गुड़ा है तार एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ एनआरएचएम एनआरएचएम ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी कैटरेक्ट डेंगू फाइलेरिया कालाजार मलेरिया है तो यही सब जिनस को मोर्टालिटी रेट को रिडक्शन करवा है तार एक्सपेक्टेड आउटकम्स तापरे आईएमआर आ एमएमआर सेटा को देखिबा सेटा केमते रिडक्शन न होबो तार सेटा मध्य देखिबो तो ये सब आपण मानकु लेखिया को पड़िबो रोल्स आउ तार एक्सपेक्टेड आउटकम्स तार कोन कोन से जिंस को ता कंट्रोल ले रखुछि That's your questions. तापरे पढ़िबा प्रोवाइडिंग एन accredited social health activist को माने आशा कर्मी मानन को कोन करबा ना currently health female worker is heavily overworked so currently female workers heavily overworked as she is cater to more than 5,000 population especially in states सेमानकर काम है सर्विस एंड रूरल एरियाज job responsibilities of Anganwadi worker like supplementary nutrition, preschool educations, other support activities leave little time for her to take up responsibility to bring about a change in health in the village. The void is proposed to fill through new community based functionaries माने जेमती कि आशा कर्मी रो काम कोन ना से कोन करे इंटीग्रेशन ऑफ ऑनगोइंग डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम सी सर्वे करिवो डोर टू डोर सर्वे करिवो ऑल्सो वर्क विथ अंगनवाड़ी कर्मी टू टेक द सर्वे रिपोर्ट तो अंगनवाड़ी कर्मी को से रिपोर्ट्स केमती आनती ना अबाउट द प्रेग्नेंट वुमेन इज देयर लैक्टेटिंग मदर चाइल्ड इम्यूनाइजेशन देयर मेडिकेशंस छुआ मार मेडिकेशंस गोटे कौन रिप्रोडक्टिव एज जो मानकर थाए जमती कि एडोलेसेंट गर्ल्स से मानकर हेल्थ प्रॉब्लम्स से मानकर इम्यूनाइजेशंस से मानकर किछि कम्युनिकेबल डिजीजेस एई सबुर से माने ध्यान नियंती प्लान करंती आ तांगा न्यूट्रिशंस एक्सेट्रा सब जिनस देखंती आशा कर्मी प्रोग्राम्स रो बहुत क्वेश्चन आसीबो आपण माने प्रोग्राम रो मेन एम गोल्स ऑब्जेक्टिव्स सडा बुझीबा को चेष्टा करंतु ट्यूबरकुलोसिस पई कि मेन तार सब कोन कोन दरकार लेप्रोसी पई कोन कोन दरकार है ए सब जिंस को मेन ऑब्जेक्टिव आ तार ये एम कोन ऑब्जेक्टिव कोन यू हैव टू राइट इन द एग्जाम other programs for the promotion of mother and child health and nutritional status आउ सब कोन प्रोग्राम्स रहिला मदर्स और चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस पई गोटे अछि आईसीडीएस एटा भी बहुत श्योर क्वेश्चंस आसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम तो आईसीडीएस सेटा कोन हुए वर लॉन्च इन 2 अक्टोबर 1975 तो 1975 रे सेटा हेइतला इन pursuance of the national policy for children in 33 experimental blocks. Success of the scheme stimulated the expansion of scheme to एतिकी तो तार बेनिफिशियरी लेखिबा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट आईसीडीएस वाज लॉन्च ऑन द 2 अक्टोबर 1975 रे आईसीडीएस टा माने सेटा इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट हेइतला एटा कोन पई हेइतला ना से मानकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटा करितला तो कोन पई कि ना फॉर चिल्ड्रेन प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर बा लैक्टेटिंग मदर तो तीन जन को हेल्थ को आखि आगे रखी गवर्नमेंट
1975 रे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इनिशिएट कला। देन बेनिफिशियरी किए से रोचे एटा श्योर क्वेश्चन। बेनिफिशियरी किए रहउचंती ना चिल्ड्रंस बिलो 6 इयर्स बा प्री स्कूलर्स जो रहउचंती बिलो 6 इयर्स, तो से माने प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर एंड वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 44 बा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप रे जो लेडीज रहउचंती दे ऑल आर इंक्लूडेड बा बेनिफिशियरीज ऑफ दिस प्रोग्राम आईसीडीएस प्रोग्राम। देन ऑब्जेक्टिव तार कोन लिखिबे ना ऑब्जेक्टिव तार मेन ऑब्जेक्टिव हैला improve the nutritional and health status of children। छोट पिलांकर न्यूट्रिशनल आ हेल्थ स्टेटस टाकू improve करिबा चिल्ड्रन माने बिलो 6 इयर्स, टू ले द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तापर तार गोटे फाउंडेशन बा बेस करा हबो प्रॉपर ताकू साइकोलॉजिकली फिजिकली आ मेंटली डेवलपमेंट केमिति चाइल्ड रो हेई परिबो, to reduce the incidence of mortality, morbidity and malnutrition at school dropout। तो आउ गोटे कौन तार मेन ऑब्जेक्टिव ना से कौन करे रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड रो मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी ओके, तो ताकू रिडक्शन करिया पे। तो एटा बहुत इंपोर्टेंट, एटा सब वर्ष क्वेश्चन आसे इन शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज इन लॉन्ग क्वेश्चन रे आसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट integrated child development services was launched in 1975 by the government of India कारण for the for children pregnant and lactating mother। beneficiary से लिखिबे children below 6 years pregnant lactating mother and the reproductive age ladies who are coming under 15 to 44 years हैला। ऑब्जेक्टिव हैला इंप्रूव करिबा न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, 6 वर्ष भितर जो चाइल्ड अच्छी न्यूट्रिशनल और हेल्थ प्रॉब्लम को इंक्रीज करिबा एंड टू ले द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल फिजिकल सोशल डेवलपमेंट हबो। देन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ जो छोट छुआ माने डिजीज रे मरी जाउछंती, तो मोर्टालिटी रेट आउ किछि डिजीज जंती निमोनिया डिसेंट्री डायरिया मालन्यूट्रिशन एई सब मॉर्बिडिटी एटा मध्य कंट्रोल ले रखिया पई आईसीडीएस रो लक्ष्य। एंड मालन्यूट्रिशन एंड स्कूल जो माने जाइबा को राजी होनांती स्कूल ड्रॉप आउट जो माने करूछंती तो सेठी तांको ट्रेनिंग करा जिवो हाउ दे विल स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। Then to achieve effective coordination of policy and implementation among the various departments to promote child development। तापरे से सब policies अच्छी lots of policies are there implementing among the various departments to promote child development। तो एटा तारो objective you have to write about the objective, then you have to write about the activities। कौन कौन activities ICDS रे होची ना होची सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन दिया जाउची अंडा छतुआ ए सब जिंस दिया होची, इम्यूनाइजेशन दिया होची पिल्लांकर जो जो टाइमिंग रे 0 रु 6 वर्ष भितरे बा पिल्लांकर जो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन टाइमिंग रे तांको इम्यूनाइजेशन कार्ड करा होची, तो अकॉर्डिंग टू देयर कार्ड्स अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग दे विल immunize the child mother lactating mother adolescent girls etc। health checkups is also there whether the child is suffering from anemia or रक्तहीनता हेतिबो iodine deficiency हेतिबो any other communicable diseases हेतिबो, तो health checkup is also going on। then referral services are there, if the referral services is needed then they will refer to that child or lactating mother or pregnant mother at the time of delivery they will refer to the hospitals for safe deliveries। safe delivery पे से माने माने पठांती। then treatment of minor illness रो ट्रीटमेंट मध्य करा जे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स रहिला कि टू कंट्रोल एनीमिया रक्तहीनता ये सब जिनसर ट्रीटमेंट मध्य सेठी चले। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन टू वुमेन, तो वुमेन मानू को छुआर माँ मानू को हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड टू अवेयर द मदर्स and preschool education to child in the age group of 3 to 6 years 3 to 6 years रे जो हमरो preschool child माने अछंती तो सेमानो को हेल्थ एजुकेशन दिया जाए इन द मोड ऑफ स्टोरी टेलिंग और then in poems and in poetry in prose ए भला गीत नाच ए सब रे ताकू
प्री एजुकेशन प्री स्कूल एजुकेशन दिया जाए कन्वर्जेंस ऑफ द अदर सपोर्टिव सर्विसेज लाइक वाटर सप्लाई सैनिटेशन एक्सेट्रा तो ये सब जिनस आमर आईसीडीएस रु मिले तो यहाँ पूरा श्योर क्वेश्चन यू हैव टू read it and try to write about objectives first beneficiaries objectives and activities okay then ICDS आउ कौन रहा आउ गोटे यहाँ श्योर क्वेश्चन आईसीडीएस गोटे मिड डे मील प्लान इज इम्पोर्टेंट and prophylaxis program of anemia control iodine control etc are also important questions then midday meal plan program is known as noon meal program you have to write midday meal plan is known as noon meal program and started in 1962 enhances enrollment and retention of attendance and simultaneously improving nutritional level among children ये कौन पे मिड डे मील प्रोग्राम कारण चाइल्ड माने जो ड्रॉप आउट करथुले स्कूल ड्रॉप आउट को से माने सेटा को बंद माने ड्रॉप आउट को माने रिडक्शन ऑफ ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल सेटा को से माने मिड डे मील प्लान कले आल्सो इंक्रीजेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड एटा ड्रॉप आउट को से माने कंट्रोल हैला कि ड्रॉप आउट जोड़ा करूथिले स्कूल को जाउ नथिले दे विल कंटिन्यू गोइंग टू स्कूल ता छड़ा न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड विल डेवलपिंग तापरे न्यूट्रिशनल स्टेटस मध्ये बढ़ला तार एटा मेन एम तापरे ऑब्जेक्टिव रे कोन लिखिबे ना ऑब्जेक्टिव हैला टू रिटेन एंड इंप्रूव अटेंडेंस इन स्कूल ऑफ चिल्ड्रन स्टडीइंग इन क्लास 1 रो 8 मिड डे मील प्लान हैला 1 रो क्लास 1 रो 8 को दिया जाए सेतरे कोन हुए ना इंप्रूव अटेंडेंस मध्ये बढ़े तार एजुकेशन मध्ये हैला न्यूट्रिशन भी हैला तो सेति पई कि तार मेन ऑब्जेक्टिव हमर मिड डे मील प्लान improving the nutritional status of children in classes of 1 to 8 in government local bodies and government aided school nutritional status बढ़िला attendance बढ़िला also education मध्ये बढ़िला encouraging poor children belonging to disadvantaged section to attend school more regularly help them concentrate at classroom activities तो poor children जो माने कि जो मनकर कि से मनकर खाइबा तांको पई कि बहुत ये हो जाए पाठ पढ़िबा मध्य तांको पई कि प्रॉब्लम हो जाए तो से माने भी आसिकी मिड डे मील प्लान टा एनकरेज पुअर पीपल को कला प्योर चिल्ड्रेन को कला कि एठी आसिकी खाइबा सहित पाठ पढ़ा हो जिवो एनकरेजिंग पुअर चिल्ड्रेन इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस improving attendance in the school with education सेडा लिखिबे objective रे providing nutritional support to children of primary stage in drought affected area during summer vacation nutritional support of children जो माने सब बन्या अंचल रे किछि खाइबा को मिले ने हला तो से मानन को मध्ये मिली जाए खाद्य एठू तो एई सब ऑब्जेक्टिव लिखिबे बेनिफिशियरी को माने जाउछंती ना से माने बेनिफिशियरी हैला प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल का क्लास रु 1 रु 8 पिला 6 रु 14 वर्ष पिला सेतरे बेनिफिशियरीज रहंती 1 रु क्लास 8 जाए द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स फैमिलीज आर गिविंग प्रायोरिटी तो जो मानकर एक्चुअली जो माने हु आर बिलोंगिंग टू वेरी लो इकोनॉमिक ग्रुप्स जो माने इन्वॉल्व रहंती तो से माने ही बेसी गवर्नमेंट स्कूल्स और मिड डे मील प्लान पाई कि से माने बेनिफिशियरीज बोली कहा जाए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फैमिलीज आर गिविंग टू प्रायोरिटी activities cooked nutrition meal is given to students in pre primary school upper primary तो तांको न्यूट्रिशियस मिल्क दिया जाए देन तादरे कोन दिया जाए ना 450 किलो कैलोरी and 12 gram protein while children in the upper primary stage receive 700 kilocalorie 20 gram protein तो हमें जो क्लास 1 रु 4 भितरे 1 रु 4 भितरे कि 1 रु 5 रे 450 किलो कैलोरी 12 ग्राम प्रोटीन मोर देन दैट 4 रु 5 रु 8 जाए तो से माने 700 किलो कैलोरी 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाए The organization program is implemented through existing network of school. One of the school teacher is designated as the organizer and is responsible for the implementation of the scheme. तो school रो जने head जे कि ताको organize करिवो maintain करिवो and responsibility नबो about the mid day meal plan scheme. ता माने आपण माने ए दिटा जो important जिंस मु कहिले mid day meal plan program ICDS program
You have to write about objective, beneficiaries, activities. एतिक लिखो, organization not necessary. तो स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम आम देखा, यहाँ भी बोधे इम्पोर्टेंट. स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम रे कौन होची ना, स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम SNP was launched in 1970 by the Ministry of Social Welfare Government of India. एटा कौन कला ना, सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटा इनिशिएटेड करथिले. It was initially launched in the central program but was transferred to the state of sector during the fifth drive. ता माने ऑब्जेक्टिव तार कौन देखिबा, program is to improve the nutritional status of preschool child. Special nutritional program ICDS program भलिया से कौन करे ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इंप्रूव करिबा न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द प्रीस्कूल चाइल्ड. प्रीस्कूल चाइल्ड माने 3 ରୁ 6 वर्ष. तबरे प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर of poor socio-economic groups in urban slum, tribal area, drought-prone area, rural area. आई सब जो जगह मन करे बहुत रूरल जगह मन करे lack of जो माने in poverty, those who are belonging to poverty level, माने जो माने खाइबा को नहीं, रूरल एरिया जो lack of knowledge, illiteracy बेसी, poverty मध्य बेसी, सेही पिला मनकर प्रीस्कूल चाइल्ड, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग मदर को SNP प्रोग्राम रे इंक्लूडेड करा जाए बा ऑब्जेक्टिव रे से माने रहिबे. बेनिफिशियरी रे मु ऑलरेडी एद्रे पढै देली, प्रीस्कूल चाइल्ड रहिबो, प्रेग्नेंट रहिबो, लैक्टेटिंग मदर रहिबो. एक्टिविटीज दला टू प्रोवाइड सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज with vitamin A solution, iron, folic acid with immunization is immunization नहीं बोधे नहीं. स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम रे खाली सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन दिया जाए और हेल्थ केयर सर्विसेज दिया जाए, जमती कि विटामिन ए है, आयरन फॉलिक टैबलेट्स है. तो यही सब जिनस गुड़ा जो आमर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशनल और सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन आउ गोटे है सप्लीमेंट्स भी दि जाए. सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशंस भितर आसी जाउची छतुआ, अंडा ये सब जिनस जमती दि जाउची, तो सेटा भी दिया जिवो. प्लस इन टैबलेट फॉर्म्स आयरन, विटामिन ए, आयरन, फॉलिक एसिड एटा स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम रे आसीबो. यू हैव टू राइट अबाउट ऑब्जेक्टिव, बेनिफिशियरीज, एक्टिविटीज है ना. देन अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम SNP आउट ANP एटा डिफरेंस आसीबो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ANP एंड SNP है ना. तो ANP कौन ना, प्रोग्राम इज नाउ ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस as it is no longer to operation. The ANP was first implemented in Odisha, Andhra Pradesh in 1962. तो तार ऑब्जेक्टिव है टू मेक पीपुल कॉन्शियस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल नीड्स, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशंस फूड एंड इट्स कंजप्शंस. आर ऑब्जेक्टिव कौन है ना, टू मेक पीपुल कॉन्शियस एंड देयर न्यूट्रिशनल नीड्स. तांको हेल्थ अवेयरनेस आमे जोटा अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करिबा, तो तांको आमे कहिबा न्यूट्रिशनल नीड्स अकॉर्डिंग टू देयर एज. अकॉर्डिंग टू देयर एज तमर धर चिल्ड्रन अच्छो कि लैक्टेटिंग मदर अच्छो कि जहाँ भी अच्छो, तमर जो एज ग्रुप रे अच्छो, तुम पे जेतिकी न्यूट्रिशनल नीड्स जेतिकी दरकार, तो यू हैव टू टेक. तांको एटा आमे कॉन्शियस करेबा. टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशंस फूड, तांको कहबा तार प्रोडक्शन केमती बढ़िबो. जेमती आमे चूड़ा, चाउल, गहम ये सब जिनस खाउचु कि पनीपरिबा खाउचु, वी हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशंस फूड एंड इज कंजप्शंस आल्सो. जेमती प्रोडक्शन बढ़ेबा सेमती हमरो खाइबा मध्य. टू प्रोवाइड सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन टू वनरेबल ग्रुप थ्रू लोकल प्रोडक्शन ऑफ फूड. तो वनरेबल ग्रुप को माने ना, चिल्ड्रेन, pregnant women, lactating women are coming under vulnerable group production of food. तो beneficiary के रहिबे ना, vulnerable group रे रहिबे preschool child, children between 3 to 6 years, pregnant and lactating mother, they are coming under vulnerable group. तो ANP nutrition program जोटा applied nutrition program. Then activities कौन रहिबो ना, ANP production of nutritious food by people themselves and by consumed by them to improve their own nutritional status, poultry farming, horticulture, beehive keeping, kitchen gardening, nutritional education are main activities in the tamne activities रे कौन रहिबो ना, how to increase production of nutritious food. तो आमे तम कहबा किचन गार्डन करो, जेमती कि सजना गछ, कारण सजना गछर पत्रठू, फलठू
सबु जिनसरे न्यूट्रिशन भरी हेकि रही मिनरल्स विटामिन्स है सबू तादरे रोची तो से कि आमे तांको एनकरेज करवा फॉर हाउ टू प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशियस फूड पाई कि तो तांको कहवा किचन गार्डनिंग देन हॉर्टिकल्चर पॉल्यूट्री फार्मिंग एंड ये सब जिनस करवा द्वारा कौन हम ना आमर न्यूट्रिशन रो प्रोडक्शन बढ़िबो एज वेल एज कंजप्शन मत बढ़िबो जेतोले प्रोडक्शन बढ़िबो सेतोले कंजप्शन आल्सो इंक्रीज है एटा लिखिया को पड़ो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम मिड डे मील प्लान आईसीडीएस प्रोग्राम यू हैव टू राइट व्हीट बेस्ड सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन प्रोग्राम कौन तार द व्हीट बेस्ड सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन प्रोग्राम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्टार्टेड इन 1986 रे सेडा तयारी हेतला तार ऑब्जेक्टिव कौन ना प्रोग्राम एम्स टू एनलार्ज द स्कोप ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम बाय कवरिंग एडिशनल बेनिफिशियरीज तो ये प्रोग्राम रो स्कोप्स कौन ना इटा गोटे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एडिशनल बेनिफिशियरीज प्री स्कूल चिल्ड्रेन एंड लैक्टेटिंग मदर एक्सपेक्टेंट मदर थ्रू व्हीट बेस्ड सप्लीमेंटरी माने सबु जाक बेनिफिशियरी सेम गोटे ला प्री स्कूल चाइल्ड 3 to 6 इयर्स गोटे प्रेग्नेंट गोटे लैक्टेटिंग मदर से व्हीट बेस्ड सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन केमती मिलवा दरकार देन बेनिफिशियरीज है चिल्ड्रेन ऑफ प्री स्कूल एज नर्सिंग and expectant mother and disadvantages area in high with IMR high concentration of scheduled caste particularly in urban slum backward rural tribal areas तो rural areas tribal areas है ना तापरे जोठी IMR जोटा infant mortality rate बा शिशु मृत्यु हार जोठी अधिका तो से मानको पाखरे ए WNP wheat based supplementary nutritional program सोडा से मानको मिले तो एक्टिविटीज है कौन ना अंडर दिस स्कीम सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड फॉर द प्री स्कूल चाइल्ड प्रेग्नेंट आ गोटे लैक्टेटिंग मदर सेटा दीटा कंपोनेंट्स अछि सेंट्रली फंडेड कंपोनेंट आ गोटे स्टेट फंडेड गोटे सेंटर रु आसे फंड आ गोटे स्टेट रु आसे दीटा सेंट्रली फंडेड कंपोनेंट है कौन ना से सप्लीमेंटरी फूड गिवन टू चाइल्ड एंड एक्सपेक्टेड नर्सिंग मदर से दिया जाए सेंट्रल जोटा आसे सेटा आउ स्टेट फंडेड जोटा आसे इनिशियली प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एट द सब्सिडी by providing supplementary nutrition to the beneficiary covered by the state government nutritional program रे जहाँ जहाँ आसे से माने सेटा दियंती और सेंट्रल गवर्नमेंट रे आसे जेन प्री स्कूल चाइल्ड लैक्टेटिंग मदर प्रेग्नेंट से मानू को दिया जाए तो बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम बीएनपी मु जेति की न्यूट्रिशनल प्रोग्राम रो सब पढ़ेली आ भितर गोटे जा हेले भी आसीबो मदर और चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस बालवाड़ी प्रोग्राम टा कौन ना बालवाड़ी प्रोग्राम बीएनपी प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1970 इट इज ऑपरेटेड थ्रू बालवाड़ीज एंड डे केयर सेंटर्स which are being run by the 5 national voluntary organizations सेटा voluntary organization एटा बालवाड़ीटा करिसेंती ता ऑब्जेक्टिव कौन ना प्रोग्राम एम्स टू सप्लाई अबाउट 1/3 of the calorie and half of the protein requirements of the preschool child as measured to improve their nutritional and health status तो ऑब्जेक्टिव हैला हमर प्रीस्कूल चाइल्ड रो जति की प्रोटीन कैलोरी जहाँ भी दरकार तार न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस टा बढ़ाया पे बालवाड़ी रा थिला केवल पिल्लांक पई कि न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस को बढ़ाया पे बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम हेतला आउ को माने जिबेनी बेनिफिशियरी को माने ना आर प्रीस्कूल चिल्ड्रन एज बिटवीन 3 to 6 years priority is given to the child belonging to low income group जो माने low income group who are coming under scheduled caste scheduled tribe then they were the beneficiaries of balwadi nutrition program activities alla the supplementary nutrition is given to child of 270 days 270 दिन तांको supplementary nutrition दिया जाए apart from nutritional supplement activities of social and emotional development undertaking and balwadis तो से केवल प्रीस्कूल चाइल्ड को दबा को जोटा बेनिफिशियरी माने जो माने हु आर कमिंग अंडर वेरी लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप जे माने बहुत गरीब श्रेणी रे आसुचंदी जो ना शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एमानकर जो पोवर्टी रे जो माने रहउचंदी तो एजुकेशन तांकर नाही हला तो किछि नाही तो सेमानकु एई बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम थ्रू रे तांको दिया जाए तांकर हेल्थ हाउ
न्यूट्रिशनल स्टाटस डेवलपमेंट पाई तेरा सब इम्पोर्टेंट कहीदेली बालवाड़ी प्रोग्राम एएनपी प्रोग्राम स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम व्हीट बेस्ड सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन प्रोग्राम मिड डे मील प्लान एंड ICDS these all are important you have to attend all the questions in examination okay then what about income generations programs then we will studying how we will generate incomes how will you generate incomes and what are the programs कौन programs अच्छी income generation पाई evaluation of special programs are types of programs are various types of economic and social programs can be identified are purely social programs alla kono na which are consumption oriented in that they do not seek to help to enhance production the examples of the integrated child development service scheme by ICDS also in the category would be included various health programs immunization programs and nutrition programs तो टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स रे गोटे ICDS प्रोग्राम्स आसुची बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स आसुची आ मिड डे मील प्लान आसुची तो एई सब हैला प्रोग्राम्स then immunization need program सब कौन ना से आसी जाउची को एज ग्रुप रे कौन कौन वैक्सीन दबा कथा इम्यून द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम्स आर concept of minimum needs and basic needs MNP evaluations of minimum needs program ସେଥିରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା କାହାକୁ ତାଙ୍କୁ ରହୁଛି ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଡିସିନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ अर्ली डिटेक्शन ऑफ मॉर्बिडिटी एंड रेफरल सर्विसेज तो यही सब जिनस कौन आम रोचे ना मिनिमम नीड प्रोग्राम लोक मानकर मिनिमम नीड्स कौन कौन तांकर अति कम रे हमको कौन तांको दे परिबा आमे तांको दे परिबा तो यही प्रोग्रामटा हेची यू हैव टू राइट अबाउट द फैसिलिटीज बा आमे ताको लिखबा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम रे कोन लिखिबा हेल्थ फैसिलिटीज इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव मेडिसिन्स द माने सेटा जाउची फैमिली प्लानिंग इज आल्सो कमिंग अंडर गुड न्यूट्रिशन अर्ली डिटेक्शन ऑफ मॉर्बिडिटी एंड रेफरल सर्विसेज माने केमती जल्दी गोटे डिजीज रो आमे डिटेक्शन करबा आ ताकू तार रेफरल जगह को आमे ताकू रेफर करबा ए जगह को जे मेडिसिन खा ए जगह को जे ना रजिस्ट्रेशन कर तो यहीटा है आमर यही जो ये प्रोग्राम रो मिनिमम नीड MNP रो तार ऑब्जेक्टिव सप्लाइंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू प्रॉब्लम विलेजेस सफरिंग फ्रॉम कनिंग स्कार्सिटी ऑफ सेफ सोर्सेस ऑफ वाटर जोटी पानी रो अभाव हो जाउची देन सेइटु को सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आमे ताकू पठेबा प्रोवाइडिंग ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू ऑल विलेजेस हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 1 तो माने विलेज मान को गाँ मान को भल रोड दबा है तापरे कौन रही प्रोवाइडिंग ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू ऑल विलेजेस हैविंग द पॉपुलेशन प्रोवाइडिंग डेवलप्ड होम साइट्स फॉर लैंडलेस लेबर इन रूरल एरियाज रे जो मानकर घर द्वार किछि नाही तांको होम जोगेबा carrying out environmental improvement in slum एरिया रे जो पानी जमी थाए कोठी असना माने जमा है कि रही थाए तो we have to carry out environmental improvements in slum area रे environmental को clean how to clean to aware that people तो people को aware करिबा how to clean the slum areas environmental environmental improvement केमती हमें ताको करिबा environmental cleanliness improvement in slum areas providing developed home sites for landless labor जार land नहीं तांको दबा तापरे roads to all villages providing all fine road to all villages supplying drinking water of problem suffering from chronic scarcity of sources of water जोटी पानी मिलुनी है आउ सब हेल्थ प्रॉब्लम्स फैमिली प्लानिंग न्यूट्रिशन आउ सब डिजीज रो टेस्ट सब करबा आ कोठी रेफरल सर्विसेज को पठेबा एटा ए प्रोग्राम रो काम मिनिमम नीड MNP रो काम देन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हमें केमती करबा ना कॉमन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम अच्छी तो से नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स अच्छी एनआरईपी एनआरईपी रो तार ऑब्जेक्टिव कौन जनरेटिंग एडिशनल गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड पर्सन्स बोथ मेन वुमेन इन रूरल एरिया रे जो झील मानकर किसी एम्प्लॉयमेंट नहीं नथिंग एनी एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इज देयर तांकू किछि गोटे स्कीम्स दबा टू जनरेटिंग दैट एडिशनल इनकम्स तो इनकम पाई तांको किछि एम्प्लॉयमेंट पाई किछि किछि स्कीम्स दबा creating productive community assets to direct and continuous benefits to the poor and for strengthening rural economics and social infrastructure lead to rapid growth of rural economy and steady rise in income of the rural people तो एटा commonly national rural employment program रे तो इथरे कोन होउची ना इंफ्रास्ट्रक्चर तांको जोगे दबा तो जहाँ फल कि इनकम सोर्स विल बी हाई इन रूरल एरियाज इन इट इज ओनली फॉर रूरल एरियाज तो यही सब जिनस एथरे आसे रूरल लैंडलेस एम्प्लॉय गारंटी प्रोग्राम जोटा आरएलईजीपी तो सेठी तार रहुची कोन ना क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एंड ड्यूरेबल एसेट्स टू डायरेक्ट कंटिन्यूइंग बेनिफिट्स टू पुअर एंड स्ट्रेंथनिंग रूरल इकोनॉमिक्स एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो एथरे भी स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल पीपल्स पर्टिकुलरली लैंडलेस लेबर जो मानकर लैंड नहीं किछि नहीं तो सेमानो को एम्प्लॉयमेंट केमती इम्प्रूविंग करबा इंफ्रास्ट्रक्चर जोगे दबा तो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉय गारंटी प्रोग्राम तापरे जवाहर रोजगार योजना रोजगार योजना रे कोन आसुची ना जवाहर योजना रे आसुची 50% of the available funds should have been utilized by the district. The opening balance of the district is no less than 25% of the district allocation. अच्छा आरो कौन स्कीम रो अछि ना लॉन्च मॉडिफाइड फ्रॉम द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम सेटा हला जवाहर रोजगार योजना रो मेन तार ऑब्जेक्टिव हला फूड फॉर वर्क प्रोग्राम as one of the main characteristic payment of the part of the wages in food grain. The main focus of this program was on providing employment with special stress for landless labor. तो जो मानकर जमी बाड़ी किछि नहीं तो सेमानंकु सेमाने केमती एम्प्लॉयड हेबे तो सेटा तार मेन एम टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट वन मेंबर फ्रॉम ईच रूरल लेबर हाउसहोल्ड रूरल लेबर श्रेणी लोक जो अच्छा रूरल एरियाज रे तो तांको घर भितर जनकू एम्प्लॉयमेंट दबापाई एटा मेन लक्ष्य जवाहर रोजगार योजना up to 100 days in a year. A need was however felt to devise a new program which would aim to provide intensive employment in backward areas. In the was attacking unemployment in economically backward villages or in rural areas. Then in a one person of a family, gotte family ro gotte person को employed करिया पाई, they will provide infrastructure to that person from a family. तो गोटे फैमिली रो जणे मेंबर को इंफ्रास्ट्रक्चर देकी तार एम्प्लॉयमेंट स्टेटस टाकू इंक्रीज करिबा जवाहर रोजगार योजना रो मेन मूल लक्ष्य. एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स फॉर द रूरल पुअर तो रूरल रे जो पुअर अछंती रूरल एरियाज रे मध्ये पुअर पीपल्स आर देयर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स गोटे अछि तो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम रो मेन ऑब्जेक्टिव हला टू आइडेंटिफाई द टारगेटेड ग्रुप बेनिफिशियरीज बा स्मॉल फार्मर्स टू स्टडी एंड आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम तांको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिबा टू फॉर्मुलेट सुटेबल स्कीम्स to seek institutional support and to induce credit sources to provide credit to arrange for extension services and supplies. तो तांकर हला मेन हला टारगेटेड पर्सन्स हु आर लिविंग इन ए रूरल एरियाज रूरल पुअर्स तांकू आइडेंटिफाई करिबा रूरल पुअर रे आंटी माने जो माने पॉवर्टी रे रहउचंती बिलो पॉवर्टी लाइन रे तो तांकू प्रॉब्लम सब कौन एंड फॉर्मुलेट देयर सुटेबल स्कीम तांकर प्रॉब्लम जहाँ थिबो से अनुसार तांकू सुटेबल स्कीम्स दिया जिवो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड टू इंड्यूस क्रेडिट सोर्सेस किसी क्रेडिट आकार किसी फंड्स दिया जिवो
to arrange for extension services and supply. तो ये सब जिनस तांकु जोगे दिया जिवो. तापर हमें पढ़िबा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. यूनिट 24 रे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस पढ़िबा. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हमर परिवेश को केमती प्रोटेक्ट करबा हैला. तार ऑब्जेक्टिव कोन काहे माने कोन पे इटा हमें करूछु एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन एनवायरमेंट एंड हेल्थ. एनवायरमेंट और हेल्थ भितर कौन डिफरेंसेस अच्छी. डिस्क्राइब द हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस इन इंडिया. तो कौन हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू द एनवायरमेंट पॉल्यूशन रू कौन हेल्थ प्रॉब्लम्स होची. डिस्कस द नीड फॉर एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस. डिस्क्राइब द वेरियस प्रोग्राम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द गवर्नमेंट बहुत बड़ा प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट पे केतोड़ा प्रोग्राम्स करिची. तो डिस्कस द रोल प्लेड बाय नॉन गवर्नमेंटल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटेक्शन द एनवायरमेंट. तार रोल कौन गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट हो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रो कौन रोल रोची प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट. ये सब जिनस है ऑब्जेक्टिव ऑफ टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. तार कांसेप्ट कौन ना कांसेप्ट है non-living biotics components of physical environment which include land, soil, water, air. आपको प्रोटेक्शन करिबा दी प्रकार एनवायरमेंट हमर कंपोनेंट्स रहउची. द लिविंग बा बायोटिक components or biological environment which includes कौन कौन includes होची ना biological environment interpret another change of physical environment bring about a change in biological environment. इंटरेक्शन एमंग द लिविंग बीइंग्स. गोटे लिविंग अच्छंती गोटे नॉन लिविंग अच्छंती. तो लिविंग नॉन लिविंग रे लैंड सॉइल वाटर एयर आसिला. लिविंग बीइंग्स रे ह्यूमंस एनिमल्स ए सब रहिले. तो सेमानकर इकोलॉजिकल केमती बैलेंस सेटा को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रे में देखिबा. इंटरेक्शन एमंग लिविंग बीइंग. दिस इज बिकॉज ऑफ competition for food, shelter and other necessity of life. Interaction is also due to interdependence of elements and compounds that constitute the form of an organism, about which we will explain later in the section. तो physical biological केमती and interaction among physical factors ए सब जिनस रे आमे केमती इकोलॉजिकल बैलेंस जो कहंती इकोलॉजिकल बैलेंस करिकि ही आमे एनवायरमेंटल को प्रोटेक्शन केमती करबा. तार कांसेप्ट इकोलॉजिकल बैलेंस देछि नेचुरली बैलेंस बाय इकोसिस्टम्स. ecosystem green plants harness of the energy of the sun and convert carbon dioxide. हला ग्रीन प्लांट्स कोन करछि एनर्जी जतले सूर्य किरण पडुछि सेते बेले कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू स्टार्चेस एंड सुगर्स. also materials such as minerals from rocks or soils incorporated from the plant. Therefore plants are also called the producer of the ecosystem. Plants are the main producer of the ecosystem. Next, the chemical moves into the herbivorous, the animal that survives on plants, and they move in carnivorous, the animal that survives on herbivorous. Then plant, herbivorous and carnivorous, the carnivorous animals are also called the consumer of an ecosystem. एमिति है कि जेमती गछ माने फर्स्ट प्लांट हैला प्लांट को जो एनिमल्स खाइला तपरे जो माने ओमनिवरस अछंती सॉरी कार्निवरस अछंती मांसासी से माने हर्बिवरस को नेले हर्बिवरस प्लांट सोर्स को नेले एमती है कि हमर इकोलॉजिकल बैलेंस होबो नले सब जिंस बहुत डेवलप हे जिवो जहा फले कि बहुत जिंस प्रोडक्शन होबो तो जहारे कि किछोडे बैलेंस रहिबोनी सेति पे कि इकोलॉजिकल बैलेंस थ्रू प्लांट्स
and herbivorous, carnivorous, omnivorous एमती ହେଇକି ରୁହେ. Then return to soil and decay and urine dropping. तापरे रहिला योर रोल इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रे व्हाट इज योर रोल केमती कोन करिवे ना फर्स्ट हला वी हैव टू सेव आवर नेचर प्रिजर्व आवर नेचर ग्रो मोर ट्रीज एंड नर्चर देम तांकू बढ़ेबा बा प्रोडक्शन माने ग्रो मोर ट्रीज ताकू करबा आ तार केयर नेबा देन फाइट पॉल्यूशंस create pressure groups for prevention of environmental degradations then prevent waste and wastage को हमें prevent करिबा recycle waste and unused object ताकू recycle करिबा waste को recycle करी कि नुआ production करिबा protect your environment or you will have to pay. So এই সবু জিনিস আর these are the step by step how to protect our environment. It is the role and you have to write how to preserve our nature, how to grow more trees and also take care of the trees, then how to fight pollutions also, then create pressure groups to prevention of environment pollutions, then prevent waste and wastage, then recycle the waste and unused object ro ଆମେ ତାକୁ recycle କରିବା then protect your environment ଆମେ ଏଇ ଭଳିଆ ଭାବରେ protection କରିବା. এটা ଗୋଟେ questions ଆସିବ you have to write in this form in step by step. DNHE-2 is 2 public volume 2 is completed. Avitra de kichhi any questions you will have then you can ask me. DNHE-2 volume 2. Then from tomorrow onwards we will start studying of volume 1 of DNHE-2 public health and hygiene. If anyone with any questions, any types of doubts, then you will ask me now. I have already covered the unit 15 measles, tuberculosis, whooping cough, etc. Unit 16 diphtheria, tetanus, poliomyelitis, and malaria, skin, eye, ear infections, as well as all the programs of the healthcare programs and nutritional programs are there. How to save your environment, environmental factors, these all are completed. Then if you have any types of doubts or any types of answers you want from me, then you can ask me now. ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି क्वेश्चंस थिबो रिलेटेड दिस DNHE-2 पब्लिक हेल्थ हाइजीन सब पार्ट 2 this chapters then you can ask me. आपण माने पचारि परिबे. Okay, thank you.